You all are having a puja thali. I am going to explain things on it one by one. Okay, I will explain things to you on that one by one. The first thing that I'm going to talk about is, सबसे पहले तो आज रक्षा बंधन है. Okay, रक्षा बंधन किसके लिए होता है? It is a brother festival. We all understand it's a brother sister festival. Wow, Tanushka said that puja thali. Tanushka, can you turn your camera around? Okay. Please don't light the lamp on it right now. You are keeping it too close to your phone or laptop or computer. Don't light the lamp right now. अभी उसका दिया मत on करो. अभी उसका दिया मत लगाओ. Okay. Tanishka, can you turn your camera and show me that? I want to just click a picture of it. It's looking beautiful. Wow, she's got Jaswati also in it. Subhan, would you like to sit up in the class or you want to lie down? No, I was only checking thali. Nice red flowers, Ranveer. Nice red flowers. Show it, show it. I can't see it. I can only see the katori. Oh, nice. Got it, got it. I have rose petals. Very nice. Tanishka, can I see your puja thali, please? Yes, okay, Ranveer. Very nice, very nice. Tanishka. Yes, ma'am. Tanishka, we are waiting for you. Wait, Ranveer, I will ask everyone to show the items one by one. Tanishka, are you there? Okay. Anyways, whenever she comes back, I will have a chat with her. So the first thing is the plate. Ma'am. Yes, baby. Oh. Oh, wow. Now I see it. That's looking beautiful. That's looking so lovely. Thank you. I clicked the snap of it. Yes, thank you so much. Thank you so much. Okay. All right. Now, the first thing I want, anyone will answer, okay? And one of you will only answer. I don't want chorus answer because then we don't understand each other. Okay? So, Suvan, can you tell me, why do we have a plate over there? Why do we have a plate over there? For keep brothers and to protect sisters. Okay, my question is not why do you have that puja thali. My question is, वहाँ पे plate क्यों है? Why do you have a plate over there? Girl, if she is a sister, if she wants to tie a rakhi on her hand, she do brother's puja, then tie the rakhi on her hand, closed. Okay. Ranveer, why do you think we have a plate over there? वहाँ पे plate क्यों है? And we have a plate because the sisters do the arti like this of us. Ah, okay. That is one good thing. Okay. All right. I will explain why we have a plate over there. Okay. We have a plate over there simply because there are so many items, no? There is a rakhi, there is a diya, there is akshata, which is the yellow rice, then there is kumkum, then there is chandan, then there are flowers, then there is mithai. ये सारी चीजों को हम अलग अलग तो नहीं रख सकते हैं. To keep all of them together in one place, you have a plate. Okay, that is why you have a plate over there. प्लेट इसलिए है ताकि सारा सामान हम एक साथ एक जगह में रख पाए. अरे वाह, प्रणव ने भी दिया लगा दिया. प्रणव, प्लीज बाबा, don't light the lamp right now, okay, because you have it right next to your phone. I don't want you all to light the lamp when it is next to your phone. Please don't light the lamp right now. I'm saying again and again.
अभी उस दिया को मत लगाओ. Okay, so that was the first thing. So you have a plate because you have many things to keep. So सबको एक जगह में रखते हैं, which is on the plate. Now, Pranav, you tell me. Only Pranav will answer. Why do we have kumkum on the plate? Kumkum का क्या मतलब है? हिंदू कल्चर में कुमकुम का क्या मतलब है? I don't know it. Can I talk in Marathi? Yes, you can. Yes, yes. ओळायला. Okay, all right. दूसरा काय आहे? पण कुमकुम कशाला असते तिकडे? Why do you have kumkum over there? To do that, टीका लावायला. ओके, पण टीका आपण लाल कलर घेऊनच, कुमकुम घेऊनच आपण टीका का लावतो? व्हाईट, रेड कलर कुमकुम. कुमकुम कशाला? ते घेऊन काय करतो? ओके फाइन, टीका लावतो आपण. बट व्हाई कुमकुम? Yes, Ranveer, you have an answer to it, is it? Yes, tell me. It's a God's way to just make the color red and give blessings. God's way to give the color red and give blessings. Okay, all right. 2 people have answered. Now I will answer. The red color, okay, वो जो red color है, it is also called लाल हल्दी. Okay, क्या बोलते हैं? It is also called red turmeric या लाल हल्दी. Okay, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसको पता है? विहान, डू यू नो कुमकुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हल्दी. कुमकुम जो लगाते हैं, यहाँ पे मैंने आज लगाया है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विहान, डू यू नो? Okay, it's called, listen carefully, it is called vermilion. VERMILLION, vermilion. Okay, कुमकुम को इंग्लिश में vermilion बोलते हैं. All right, remember this. It is called लाल हल्दी. It is called kumkum. In English, it is called, yes, Ranveer, that is right. Yes, it is called vermilion. And it is used by Hindus for all puja and daily purpose, right? Hindus में उसको जब भी पूजा होता है, we definitely use kumkum. Correct, Anishka? जब भी घर में पूजा होता है, कुमकुम लाओ तो अपन. Okay, and women and men use it every day. Okay, either रोज यहाँ पे टीका लगाते हैं या फिर यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं. Okay, it is used because red is a very strong color. Red is a very strong color, and wherever you see red, it immediately attracts your attention. Okay, that is why you use लाल हल्दी. When you use the color red, अभी सिग्नल में तुमने रेड कलर देखा है? तुम सबने सिग्नल में रेड कलर देखा है? You can see the red color from a long distance, right? Red color is a very dense color. It attracts attention. So you use red color either on your forehead or as sindoor or for any of the puja items because it attracts attention. It is also identifying as a product for beauty. ब्यूटी के लिए भी उस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, रेड कलर को. दैट इज व्हाई यू यूज कुमकुम. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट वहां पे क्या है तुम्हारी लिस्ट में? नेक्स्ट व्हाट डू यू हैव ऑन योर लिस्ट? वेट लेट मी सी. क्या हुआ विहान? व्हाट इज फनी? I don't know. ओके, द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज राइस के दाने इन हल्दी. वहां पे है तुम्हारे प्लेट में. डू यू हैव? राइस के दानों को हल्दी में डाला है. नहीं तनिष्का, why is it not there on your plate? It is supposed to be there. It has after kumkum. Okay. Yes. Oh wow. Wait. Take a snap of it. Beautiful.
Okay. Vihan. Ma'am, my Yes. sister has made this Rakhi at home. That's so sweet of her. Beautiful. Beautiful. Okay, listen me out. Why do we have those grains, those rice grains? Wait, I will come to it. Why do we have rice grains in haldi? Who knows? Vihan, do you know why do we have rice grains in haldi? Wait, it's Vihan's turn. Vihan, in your thali, in your puja thali, you will be having rice grains mixed with haldi. Why? Maybe it was Raksha Bandhan. You use it on the day of Raksha Bandhan, but why do you mix it in haldi? Vihan, I'm talking to you and you're getting up and going away. Ye kya baat hua? You don't know? Okay. Tanishka, do you know why do you mix rice with haldi for puja? No? Yes, Ranveer, you tell me. Because it purifies the rice. Anything if you put in turmeric, it purifies it. Excellent point. Excellent point. हल्दी जिसमें भी डालते हैं ना, हल्दी उस चीज को प्यूरिफाई कर देता है. मतलब हल्दी उस चीज को शुद्ध बना देता है. Do you see your parents cook सब्जी और दाल and रोज उसमें हल्दी रहता है? देखा है? Because haldi has the property of destroying anything that can cause harm. Okay? Haldi दूध पिया है कभी? When you're sick, you Yes. yes? Yes. Usually तो हल्दी दूध नहीं पीते हैं, but when you're sick, you put haldi in milk and drink it. Why? So anything that is harmful in the milk will get killed. Then you should put it every day. Why only when you're sick you use that? Ma'am, to Because the worms inside our stomach. To kill the worms. Yes, Subhan and Ranveer are telling the same things. Pranav, what do you say? तुमने हल्दी दूध पिया है? क्यों उसमें हल्दी डालते हैं दूध में? क्यों दूध में हल्दी डालते हैं? पता नहीं? Okay. Haldi has the property of being anti-inflammatory, anti-allergic. मतलब if you have any microorganisms or any germs inside your body, haldi will kill it. हल्दी उसको क्लीन कर देता है, उसका सफा चाट कर देता है. Okay? So what happens is when you mix haldi with something, it makes it shuddha, it makes it purified. So हम फिर पूजा में हल्दी को राइस में क्यों मिलाते हैं? Just generally think and tell me. Rice ही क्यों? Why do we mix it in rice? You know, हल्दी मिक्स किया हुआ राइस को क्या बोलते हैं संस्कृत में? Why rice? And everyone listen me out carefully. जो हल्दी रणवीर वेट जो हल्दी में मिक्स किया हुआ राइस होता है ना, उसको अक्षता बोलते हैं. How many of you have heard it? It is a Sanskrit word. It's called अक्षता. ऐकलं ना? You heard that, no? अक्षता पूजा करने के लिए भटजी आते हैं घर में, प्रीस्ट आते हैं घर में, तो बोलते हैं अक्षता घेऊन या, मोठ्या लोकांनी एक साईडला उभे राहून घ्या. They say that, no? Ma'am, in weddings also. Yes, in weddings, in puja, when it happens in the house, you will see the priest will say, all elderly people एक साइड में खड़े हो जाओ, सब छोटे लोग दूसरे साइड में खड़े हो जाओ, and elderly लोगों के हाथ में अक्षता देते हैं. क्यों देते हैं अक्षता? अक्षता कशाला देतो आपण? Because it purifies the baby. But why rice? That's what I'm asking. Haldi purifies, ये तो समझ में आया, but why rice? And it is known that it keeps your house nice. God will give blessing. Okay. I will answer that.
हमारे घर में सब्जी हो या नहीं हो, दाल हो या नहीं हो, राईस हमेशा रहता है, करेक्ट? तांदूळ नेहमीच असते घरी. राइस हमारे घरों में हमेशा रहता है. या राइस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर हाउस. नाउ राइस क्या आइडेंटिफाई करता है? राइस आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद द फैक्ट दैट घर हमेशा भरा है, घर खाली नहीं. जब भी घर में राइस है मतलब यू आर कंफर्टेबल कि खाना तो मिल जाएगा और कुछ ना चाहिए, राइस खा के तो पेट भर जाएगा. है ऐसे सोचते हैं ना? अरे काहीच नाही का, चला तांदूळ करून घ्या, चावल खा लेते हैं, राइट? हमारे घरों में हमेशा से राइस रहा है. इंडिया और एशिया as a continent, Asia is always abundant with rice. Asia always eat a lot of rice. एशिया में हमेशा राइस रहता है. राइस हमको बताता है कि घर में कंफर्ट है, एबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है. जब राइस को हम हल्दी के साथ मिक्स करते हैं, when we mix turmeric with rice, it is believed that you bless people with that. Subhan, please sit. बैठे रहो, इतना मत हिलो, इतना मत हिलते रहो, बैठो, थोड़ा देर बैठ जाओ. Okay, when you mix haldi with rice, it shows that there is prosperity, मतलब फ्यूचर अच्छा है. There is abundance, मतलब बहुत दान है घर में. इसीलिए बड़ों को बोला जाता है कि अक्षत डालो ब्लेसिंग्स के साथ छोटों पे, ताकि उनके लिए भी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, उनका भी अच्छा. इसलिए अक्षत. Did you all understand this today? बाद में घर में जाके I want you all to explain to your parents why we use akshata in our puja, in the Hindu custom. Why do we use akshata? Okay, explain क्यों होता है, explain rice क्यों होता है, explain कि उसको mix करके क्यों हम लोग blessings देते हैं. Okay, I want you all to explain that in your house. Okay, the next thing, why do we have mithai in the puja plate? मिठाई क्यों रखते हैं? मुंह मीठा करने के लिए. क्या क्या? मुंह मीठा करने के लिए. मुंह मीठा क्यों करना रहता है? Why should you do that? क्यों मुंह मीठा किया जाता है? क्योंकि मानते हैं कि मेहमान हमारे भगवान है. मेहमान हमारे भगवान है, पर पूजा हम हमेशा मेहमान की तो नहीं करते हैं. You don't always do puja. Today is Raksha Bandhan, right? Today it is brother and sister. Brother or sister is not mehman. Brother or sister is not guest. So why do you do muh meetha? Why do you have mithai in your puja plate? बहन का मुंह मीठा करने के लिए. मुंह मीठा क्यों करना चाहिए? भाई का मुंह मीठा इसके लिए करते हैं कि वो हमेशा खुश रहे. हमेशा खुश रहे. ओके, क्यों? तुम मिठाई नहीं खाओगे तो खुश नहीं रहोगे? क्यों तनिष्का मिठाई नहीं खाओगी तो खुश नहीं रहोगी? देखो आज तनिष्का के प्लेट में मिठाई है, तब भी तनिष्का एकदम करके बैठी है. ओके, पूजा में मिठाई इसलिए रखते हैं, सुन लो, लिसन केयरफुली. पूजा में मिठाई इसलिए रखते हैं बिकॉज उससे मिठास बढ़ता है. You want to be sweet with people, you want to be nice with people around, right? So what happens when you spread and you give मिठाई as prasad? क्या होता है? You are happy and you eat it nicely. You will see बच्चे तो ऐसे चाट चाट के खाते हैं, है ना? जब मिठाई हाथ में मिलता है. Now when you go to the गणपति पंडाल, अगर गणपति का पंडाल बनेगा कहीं पे और वहां पे जाते हैं तो हम लाइन में लग के वो मिठाई लेते हैं, करेक्ट?
क्यों? जितना भी थोड़ा लाइट हो। उससे मिठास बढ़ता है। ओके, द स्वीटनेस इज स्प्रेड। मिठाई नहीं, मिठास। स्वीट इज द मिठाई, मिठास इज स्वीटनेस। उससे जो मिठास बढ़ता है, द स्वीटनेस दैट इज स्प्रेड व्हेन यू शेयर द मिठाई इज ब्यूटिफुल। सब बहुत अच्छा अच्छा फील करते हैं जब मिठाई बंटता है। मिठाई बंटता है तो सब लाइन में लगते हैं, करेक्ट? Yes or no? Yes. Why you bring in nice things around you. That is why you have mithai in the puja plate. अच्छा, flowers क्यों होता है? Come on, Pranav, you should be able to tell me. Flowers क्यों होता है पूजा के प्लेट में? ऐसे ही। तुम प्रणव हो? Are you Pranav? हाँ, प्रणव तुम बताओ. Why do you have flowers in the puja plate? Ranveer and Tanishka, don't fiddle with the diya. Don't fiddle with the diya. Okay, Pranav's screen is frozen. Tanishka, why don't you tell me कि पूजा के प्लेट में flowers क्यों है? Vihan, you tell me, why do we have flowers on the puja thali? Maybe so that it can easily be. I don't know. Continue your sentence. Continue your sentence. It can easily be. That can easily be fine. Maybe we put flowers on Sunday because so that we can celebrate Raksha Bandhan. Huh. No. I asked you, why do you always have flowers in a puja thali? Even if it is not Raksha Maybe Bandhan. the reason why we keep flowers in a puja thali is the reason we keep it maybe because to do puja. Okay. What is the most important thing that flowers bring in? Flowers होते हैं तो क्या रहता है वहां पे? Flowers होता है तो क्या रहता है वहां पे? खुशियाँ आती है, खुशबू आती है, करेक्ट, खुशबू, फ्रेग्रेंस. Why do we have flowers? Because flowers bring in fragrance. और जहां भी पूजा में जाओगे तो तुमको मिलेगा रोज, शेवंती, लोटस, मोगरा, चंपा, चमेली. Why do you have all these flowers? Because they bring in fresh smell. इतना अच्छा खुशबू ले आता है वो फ्लावर, इसीलिए यू हैव फ्रेश स्मेल वाला फ्लावर्स. तुम जिस फ्लावर में स्मेल नहीं होता है उसको रखते हैं क्या पूजा में? नहीं. जो एकदम फ्रेश स्मेल देने वाला फ्लावर होता है उसी को रखते हैं पूजा में. इसलिए पूजा की थाली में फ्लावर्स होते हैं बिकॉज वो थाली में से ही खुशबू आने लगता है. तुम्हें अगरबत्ती या कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं रहती है. जस्ट द फ्लावर विल ब्रिंग इन फ्रेग्रेंस. नाउ दिया, व्हाई डू यू हैव दिया? कम ऑन, सुभान कैन एक्सप्लेन कि दिया क्यों लगाते हैं. सुभान, तुम्हारे घर दिया इसके लिए लगता है कि पेट में ना सब तरफ लाइट आ जानी चाहिए और हमें पूजा के लिए हमें वो जो धुआं जाएगा ना गॉड के और हमको ब्लेसिंग्स मिलेगी. सुपर. दिया लगाने से क्या होता है? दिया लगाने से क्या होता है? दिया लगाने से अंधेरा मिट जाता है. लाइट करने की वजह से लाइट आ जाता है. दिया लगाने से लाइट आ जाता है, अंधेरा मिट जाता है. ओके, so that is why you light a lamp on the puja thali because it spreads light, it brings in brightness. Okay, and आज के दिन में राखी रखा हुआ है उस प्लेट में. आज के दिन में उस प्लेट में राखी रखा है क्योंकि आज रक्षाबंधन है. एंड इसलिए प्लेट में ही राखी रखते हैं बिकॉज
you want that all these goodness, ये प्लेट में कितना सारा goodness है देखो, इसमें अक्षत है जो prosperity लाता है, इसमें कुमकुम है जो ब्यूटी ले आता है, इसमें दिया है जो ब्राइटनेस बढ़ाता है चारों तरफ, इसमें फ्लावर्स है जो खुशबू ले आता है. When you smell in that flower, you feel fresh, right? Yes or no? Yes or no? हाँ, नहीं तो फिर ना बोलो, हाँ है तो फिर हाँ बोलो. फिर इसमें मिठाई है जिससे मिठास बढ़ाता है सब तरफ. एंड ये सब कुछ एक प्लेट में है और उसी प्लेट में बहुत सुंदर सा राखी भी रखा है. सब लोग अभी जरा अपना राखी दिखाना. तो everybody bring up your Rakhi to the screen. All of you please bring up This is my sister. Everybody please bring your Rakhi to the screen. Everybody please hold your Rakhi to the screen. I want to click a snap. It's homemade Rakhi. Ma'am, it's homemade Rakhi. Very nice. Subhan, is this how you would like to hold your Rakhi in the screen? ऐसे ऐसे, like I'm just not interested. ऐसे ऐसे नहीं करते यार. This is not nice. It's a Rakhi. It means a lot. Now I'm going to explain to you what Rakhi. Wow, very nice. Very okay. Ranveer, wait. Pranav, explain to me your Rakhi. You said it is handmade. Your Didi made it for you yesterday. Explain it to me. Explain karo. प्रणव अपना राखी एक्सप्लेन करो. ओके, प्रणव स्क्रीन इज फ्रोजन. तनिष्का, तुम्हारा भी हैंडमेड राखी है क्या? रणवीर, डोंट टाई इट राइट नाउ. Tanishka, is your handmade Rakhi? Yes, ma'am. Okay, who made it? My sister. So beautiful, so beautiful. Very nice, very nice. Subha. Okay, okay. Vihan, explain your Rakhi to me. Explain what all are there in your Rakhi. My sister. Wow, what all is it? Are there beads on it? I can see beads on it. Okay, wow, nice. Very nice. Subhan, can you explain your Rakhi to me? Me, ma'am, my Rakhi I have purchased from outside because I did not have a Rakhi It's at okay, home. it's okay. No problem, no problem. It's okay if you purchased one. That's nice. It's looking very pretty. Ranveer, can you explain your Rakhi? Ma'am, I also purchased especially my sister likes pink, so I purchased it from outside, a pink one. So you are going to tie a Rakhi to your sister? Yes. Wow, that's lovely. Okay. I want you all to understand one very important thing. Okay. Rakhi is a festival for brothers and sisters. Subhan, pay attention here. Tanishka, pay attention here. Raksha Bandhan. Raksha means protection. Bandhan means tying it up. Means a lock. Okay. Raksha Bandhan is a festival to bring in the love, togetherness and protection between brothers and sisters. Okay. The brothers can tie it to the sister can tie it to the brother. ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ बहन अपने भाई को राखी बांधेगी और भाई प्रोटेक्ट करेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. The brother and sister are equally important in protecting each other. Okay? Please remember, the brothers and the sisters are equally important in protecting each other. It is not only for the brother to protect the sister or only for the sister to protect the brother. Okay? It is a festival for both of you, for the brother and the sister, to take good care of each other. How will you care for each other?
So Pranav, tell me Ma'am, something that you do for your sister to show that you care for her. I will not fight with her. Hey, you know what? Fighting is something that must happen between brother and sister. तभी मजा आता है बहुत. भैया बहन के साथ लड़ाई करने में बड़ा मजा आता है. You must एकदम. But हाँ, हाथापाई मत करो भाई. मारा पीटी नहीं. But तुमने मेरा लिया, मैंने तुम्हारा लिया. This is going to happen in brothers and sisters. You tell me what you do for your sister to show that you care for her. Now I will listen her work. Okay, all right, Ranveer, you tell me what will you do for your sister to show that you care for her? I'll just take care of her anywhere we have to go. I'm always with her. Okay, Tanishka, tell me Okay, something that you do for your sister to show that you care for her. I will listen her all things and not beat with her. You beat your sister? Sometimes. Oh, Yeah. my God! Sometimes we fight. I also. You raise your hand on your sister? Now that's not done. फिर तो रक्षाबंधन का क्या मतलब है बताओ? तुम राखी बांध रहे हो और कह रहे हो मैं तो तुमको पीटूंगा, हाँ? ये क्या मतलब है? That is not protection. That is not protection. That is putai. That's not done. That is not allowed. We didn't beat seriously while playing. Even I do kutai with my sister. Not done. Not done. Subhan, तुम बहुत शांति से बैठे हो. लगता है तुम सबसे अधिक तुम्हारे भाई को मारते हो. जब भी मैं मेरी नानी के इधर जाता हूँ, मेरा छोटा भाई जब भी मेरी बहन को फ्लाइंग किक मारने आता है ना, मैं उसको एक फ्लाइंग पंच मारता हूँ, नीचे गिरता है और मैं बहन को साइड में कर देता हूँ. बाप रे बाप, तुम सब गुंडा टाइप क्यों साउंड कर रहे हो? वो मेरी बहन को मारेगा, मैं भी मारूंगा ना. विहान, कुछ करती भी बेचारी उसको. Vihan, you tell me what do you do to show that you care for your brother or sister? I wish I could do responding. Sorry, Vihan, please repeat and be a little louder and clearer. Maybe in Raksha Bandhan we congratulate and give some sweets to my friends like Pranav and Tanishka. Okay, fine, fine. Good, very good. Okay, kids, today we spoke and explained about the puja thali. I want you all to remember this forever. कि अक्षता क्या होता है, क्यों होता है, कुमकुम क्या होता है और क्यों होता है, फ्लावर, दिया, सॉरी, फ्लावर, दिया, मिठाई क्या होता है और क्यों होता है. You must remember all these things. ये सब मिला के 5 items होते हैं जो हमेशा पूजा के थाली में होना चाहिए. Who will tell me which are the 5 items? Ma'am, sweet. Mithai, flower, diya, kumkum, chandan, rice. Everything. I said 5 important items. And Rakhi. I said 5 important items in the puja thali, not in the Raksha Bandhan thali. Tanishka, you start. Kumkum, flower, diya, akshada, and mithai. See, important 5 items. Pranav, tell me. Kumkum, diya, flower, Rakhi. राखी तो राखी के प्लेट में रहता है. पूजा के प्लेट में क्या क्या रहता है? मिठाई. Okay. Ranveer, you tell me the 5 items that should always be there in the puja thali. And kumkum, chandan, mithai, flower, diya.
ओके, अक्षत, कुमकुम चंदन एक साथ उसको बोला जाता है, चंदन और कुमकुम को एक साथ गिना जाता है. अक्षत is important. Okay, the haldi rice, don't forget. Vivan, tell me the 5 items that you will see in a puja thali. Ma'am, kumkum, akshata, flower, a sweet, rice, and one thing is Rice nahi, kumkum और अक्षत. Okay, then first 2 important things. Kumkum, red and yellow याद रखना. Red and yellow, kumkum और अक्षत. Red and yellow हो गया. Then sense organs, smell and taste, flower and mithai. And the important thing is light, taking away the darkness. These 5 things must always be there in your puja thali. Vihan, please tell me the 5 things that must be there in the puja thali. Sweets, some flowers, and some turmeric, and rice, and I don't know. Akshata and kumkum and diya. How come you forgot the diya? You bought the beautiful plate with diya. I don't know, nahi bolna. It's right there in front of you. And India, yes. Okay. All right, children. Have a wonderful Raksha Bandhan celebration in your house today. We are not going to tie the Rakhi over here on our online screen. No. I want you all to take time, have a good time with your brothers, your sisters. भाई है तो उसको भी राखी बांधो, बहन है तो उसको भी राखी बांधो. You, as a girl, you have a sister, तो तुम उसको राखी बांधो. As a boy, you have a brother, उसको भी राखी बांधो. It is between siblings. Raksha Bandhan is about love, taking care between siblings. भाई भाई हो, बहन बहन हो, भाई बहन हो, anything. Okay? Take care, have fun, have a good puja at your house today, and अच्छे से उसका आरती उतारो, प्रेम से राखी बांधो, एकदम ठूस के मिठाई खिलाओ. Okay? Chalo, let's go on a 2-minute break and come back for the next life skill class. Come on, let's go on a 2-minute break. Bye-bye. Happy festival today.